If you can remember in the last lecture, we were covering this section, which was beyond repetition coding, that was rotational codes of their mathematics, as well as we found their error. And finally it comes out to be this factor. I think we have covered till this point, where I call this as the squared product distance. Where the average energy of the code is normalized to 1 per sample time. That I also showed you in the last lecture. Alright, so you will be starting from here. This was the squared product distance between A and B, but you know we have 4 codes A, B, C, D. So we can also define the square product distance between any 2 codes. Now if we combine 3.55 with 3.49, which was the starting equation from the union bond, the probability of error can be bounded by probability of error between XA and XB, or confusion between XA and XB, plus probability of error of confusion between A and C and A and D. So if this is squared product distance AB, this will be AC and this will be AD. And you can just sum them up. So just changing from delta AB to delta AC or delta AD, the overall probability of error will be bounded by this sum. Here you can see if all of them are non-zero, then you will be getting a diversity gain of 2. Now this factor will determine the coding gain, which will be beyond the diversity gain. So diversity gain is a separate thing. It comes as the power of SNR, while coding gain comes as a constant term here. So if I say that these are 3 distances, and let us say I find the minimum of these 3 distances, let us say it is some A, D, then I can write that error probability is bounded by 3 times 1 over delta AD, which is the minimum. Because this is the minimum, then this will be maximum. And other 2's, you can very well see if they are greater than this, and their values will be less maximum than this maximum. Hence, if I assume that this is present in both these 2 cases, so overall can be written as less than 3 times the minimum. So 3 times the minimum means 48 over this thing. So this factor, which is the minimum squared product distance between any 2 codes, AB or AC or AD, that will determine your coding gain. Hari, do you have any question? सर डेल्टा की डिस्क्रिप्शन बता दें क्या चीज़ है. हाँ, डेल्टा देखें, we saw in the last lecture that we got this factor d1 d2 mod square. All right. Yes, sir. Now I say that this factor is called delta AB, because if you remember, what was d1, what was d2, and d2, d1 was xa minus xb1 over a, d2 was xa2 minus xb2. Actually d was equal to xa minus xb over a, but you know d is a vector because a and b are vectors. All right, so d1 is the first difference between the first 2 symbols of the first 2 of the AB code. D2 will be the second difference, the second time slot of the 2 codes.
All right, and this was d1 and d2 that we have defined already. So similarly, you can find d1 and d2 for delta AC, delta AD. All right, and whatever of them will be minimum will come here. This will be 3 over the minimum. This will come out to be 48 over the minimum. Minimum is called the minimum square product distance, while this is just called the square product distance. But the minimum will be called the minimum square product distance, and 3 times it will determine the error probability. Problem comes out to be, what should be this value of this delta? So if I find my d1 d2 between a and b, or I find my delta ab, which will be equal to d1 d2 mod square 2 cos into 2 sine, which will be 2 2 a 2 यहाँ लिखा हुआ 2 2 4, सब थोड़ा सा बड़ा है. So this will come out to be 2 2 4 sine cos square. This becomes, sine 2 theta square. This becomes delta AB comes out to be 4 into sine square 2 theta. You can also find delta AC. This you can do yourself, and it also comes out to be equal to 4 sine square 2 theta. All right. Now find delta AD, and you can see here. Oh, sorry. Delta AC comes out to be this thing, and delta AB and delta DD comes out to be the same thing, 4 sine square 2 theta. All right. So theta orientation. Theta जो मैंने आपको बताया था, the codes that we made were all dependent on theta rotation. This was your theta. जी sir. Okay. So depending on your angle of theta, which gives the rotation matrix, you are actually able to rotate your symbols from AA to some new XA and XB or XC or XD. Depending on whatever the value of theta, you can rotate your codes. सर इसमें क्वेश्चन मेरे जहन में आया था कि हमने रेफरेंस फिक्स रखना है और जस्ट हमने ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाना है थीटा पे, यानी x1 x2 फिक्स ही रहेंगे हर केस में. नहीं, यहाँ पे x1 x2 नहीं है ना, यहाँ पे XA XB XC और XD. जो फिक्स है वो तो आपका कह सकते हैं AA या माइनस AA या माइनस A माइनस A माइनस A. यहाँ पे ख्याल रखें कि A जो है वो आप भेज रहे हैं x1 के साथ, और दूसरा A जो है वो भेज रहे हैं x2 के साथ. यहाँ पे x1 एक टाइम सिंबल है और x2 दूसरा टाइम सिंबल है. अब x1 भी A और माइनस A हो सकता है, x2 भी A और माइनस A हो सकता है. इसका मतलब कि 4 कॉम्बिनेशन हो गए. ये तो फिक्स कॉम्बिनेशन हैं, मगर इनको जानबूझ के आपने किसी थीटा के साथ रोटेट कर दिया. अब आप चाह रहे हैं कि ऐसा थीटा निकालूं जिससे मेरा एरर जो है वो मिनिमाइज हो जाए. ऐसी खास रोटेशन क्या होनी चाहिए जिससे मेरा एरर जो है वो मिनिमाइज हो. सो आई से ऑल इट, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट फाइंड योर डेल्टा ए बी डेल्टा ए डी दोनों बराबर आते हैं, और डेल्टा ए सी जो है ना, दैट यू हैव टू फाइंड योरसेल्फ. नाउ व्हाट वी वांट दैट वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट delta AB is equal to delta AC. Now, why do we want delta AB to be equal to delta AC? Actually, their expressions are different, but why do we want that they are same? We want them to be same because we know that delta AD is already equal to delta AB. If delta AC is also equal to delta AB and AC and AD, all of three are equal, then you can very well write 3 over delta AB because all of them are equal. Okay. In this case, so it will become 48, and this will be well defined as the minimum square product distance. And I won't not be actually bounding on a larger number. I will be bounding on the least possible number, because if they come out to be different for some value of theta, they are all different, then you have to choose the minimum value. All right, so that will not be a very exact bond, that will be actually a higher bond.
But we want them to be exactly equal, so that I can just write 3 over that, so I get the exact bond or the most least bond. How can I get them to be equal when their expressions are different? So I go to my relevant mathematics. I say, all right, that both of them are equal. Sine over cos becomes tan. 16 over 4 becomes 4. Tan 2 theta becomes under root of 4 is 2. 2 theta becomes tan inverse of 2. So theta comes out to be half of tan inverse of 2. So tan inverse of 2 is 63. So half of 63 will be equal to 31.7. So my theta comes out to be 31.7. So I should be rotating with respect to theta is equal to 31 point. 31.7. And what should be my delta AB and delta AC? They both become equal, so they will be the same value. 4 of sine 2 theta. Theta comes out 31.71. I put the values. I get 3.2. I can also write 3.2 as 16 over 5. So my delta AB delta AC comes out to be 16 over 5, or you can just write 3.2. So my probability value will be 48 over 3.2 or 16 by 5. If I put it 16 by 5, 16 1 is in freezer, 5 goes above. So probability of error is now less than or equal to 15 SNR minus 2. So probability of error comes out to be less than 15 SNR minus 2. Now another thing that comes many times, we have actually developed a thumbs rule. Was that, what is the insight here? When will the error come? And we learned that when your H mod square into SNR is less than 1, which means that H mod square is less than 1 over SNR, and it comes out to be equal to 1 over SNR. This we learned many times. So again, that same operation will be repeated here. So to end the confusion, I have done these steps once and for all, that students are never confused. So remember this. This we got for the first time when H was just a scalar. We saw that. Then we said, all right, this is less than 1, then definitely yes, the error will be very small, because error is this. If this is less than 1, yes, error will be, the distance will be very small, and Q will be small, error will be large. All right. And it comes out that this means indeed fade events at high SNR. And we saw that it comes out to be the probability of H mod square less than 1 over SNR is 1 over SNR. Very important rule we saw. Now we have diversity. Then we saw if we have H mod square, then we saw that yes, it will be less than 1 over SNR. All right. But we saw that each of those, this is actually, this actually means it is H1 mod square plus H2 mod square plus HC, all that we saw earlier. Okay. And for this to be less than 1 over SNR, this means actually each one of them, because if total magnitude is less than 1 over SNR, this means that each one of them must be less than 1 over SNR, because all of them were independent. This we also discussed in the last lectures, just a revision. So this means that for this to be less than 1 over SNR, each one of them, H1, H2 have to be less than 1 over SNR. All right. So once all of them are less than 1 over SNR, so then their joint will be less than 1 over SNR, and the combined will be 1 over SNR times L. And explanation is given in the book and all that we have studied. It's just a brief review. Now here in rotational we have this thing. We got this expression Q of, you can see all that. This means that this has to be less than 1 over SNR. In other words, that
this factor as well as this factor, they have to be less than. Same thing that we did previously. Each one of them has to be less than 1 over SNR. So yes, each one of them has to be less than 1. So for this to be less than 1 over SNR, this means that H1 has to be less than this 1 over SNR. Similarly for this one has to be less than 1 over D mod square less than 1 over SNR. And again, as the gains become independent, this means that their joint will be equal to the product of this and this. If the product becomes an SNR square, this becomes D1 D2 square product, which is actually the squared product distance. This comes out to be the same expression that we saw here. Same expression, right? So all of this is explained now, and I think it is all clear that why we are getting these SNR and all that. So you could see that is why it has to be less than this product, less than 1 over SNR. So yes, they have to be large, because if they will be large, then you will get diversity. If any of them is 0, then you know that this was 1 plus that thing, so that will go away. You will just get 1 SNR. So that is why they have to be large to give you good diversity. But these products, they also give us another thing, and that is called the coding gain. Now another thing is how to compare this code with the repetition scheme. This was the rotational code. We will now try to compare this with the repetition scheme. Now what is a repetition scheme that comes equal to this rotational code? Remember, in rotational code, what is happening? You are sending two different symbols, A or minus A or A, or minus A, or the last one, A minus A. You are sending actually two symbols over two time slots. So you cannot compare this with BPSK, because BPSK sends 1 in 1 time slot. Okay. So we need to send 2 bits over 2 time symbols. So we use 4PAM for comparison, because in 4PAM, 4PAM was this thing, minus 3B, minus B, and all that. So you had 4 symbols, so each symbol would represent 2 bits. And these bits, they were all, you can see, in the real axis. All right. And you are sending those 2 bits. Here in rotational code, you are also sending 2 bits, but you could see that those 2 bits, they are not on a single line, but they are on 2 lines. They are on 2 slots, x1, x2, such that they are in different coherence time. All right. Well, here this symbol will be sent, and when this symbol is detected, this will give you 2 bits. The code words of the repetition scheme are, so we have seen this figure, 3B, B, and B. They were sent they will be sent like this. Here you can see code words of rotational code are this one, and code words of repetition code. So if I use the code words for repetition code, I have to repeat. If I am sending my B symbol in the next coherence time, I will be sending my B symbol. Similarly, if I am sending minus B, I will be sending minus B. Similarly for XA and XD. So these are my code words, which are actually with respect to X1 and X2, 2 symbol stars which are orthogonal. They are lying on a straight line.
बट ये हियर यू कुड कैसे हो रहा है? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? ये रेपिटेशन किस तरह हो रही है? साइंस तो चेंज नहीं हो रहे? This is, repetition scheme for 4PAM. In 4PAM, you have 3B, B, minus B, and minus 3B. But when you send 4PAM over repetition scheme, where you have two diversity paths, so you will be repeating your each symbol one time. So that is why you have two diversity paths. तो आपने B को directly repeat कर दिया ना, 3B को भी repeat कर दिया. और यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ था. If you could remember here you are sending it in terms of a rotational matrix. They were not on a straight line, but they were distributed in this plane, okay, in the 2D plane, depending on the angle of rotation. But here they are on a straight line. This is repetition scheme with 4PAM having two diversity paths. All right? Yes, sir. अच्छा. All right. So they are shown in 3.8b. We have just saw them. Now, the pairwise error probability between two adjacent code words, say xa and xp, is given as follows. So if you compare this equation with our equation for rotational, this was our rotational, q under root snr and all that sum over 2. And you can see also this here. Yes, if you will drive, because the channels are different for 3b and b and all that, they are definitely different. So once you will be driving them, you will get the same expression. But one thing is different, and that is the SNR. There, the SNR that you were getting for BPSK was a square over 2. Because if you isn't सारे steps खा गया, but if you could remember, we did those steps. And we started from here, and finally we saw actually it comes out to be a square over n naught. All right. So square root of n naught नहीं, a square by square root of n naught. क्या कह रहे हैं? हाँ, तो वो तो अंडर रूट, तो इधर भी अंडर रूट, एक अंडर रूट हो जाएगा ना बड़ा सा, ओवरऑल हो जाएगा ए स्क्वायर ओवर एन नॉट. ठीक है, ये जो ए स्क्वायर एन नॉट, ये अंडर रूट तो सारा बाहर आ गया ना, इसके ऊपर भी अंडर रूट था, इसके ऊपर भी अंडर रूट था, दैट विल बिकम अ बिग अंडर रूट. Inside you just have a square over n naught. So a square over n naught was SNR, because you could see there the difference was equal to d1 square a square, because we know that d1 is actually this thing divided by a, because it has to be normalized to unit energy. That is why d1 was xa minus xb over a. All right. But what will happen here when you will go through this derivation and you will take the difference with respect to its normalized value, you will see that it will come out to be SNR will come out to be 5b square over n naught. Why it will be 5b square over n naught, if you could remember? Hari, what was the average energy? Yes sir, यही. हाँ, याद है. वो उधर ए स्क्वायर है ना, जो वहां तो सेंडी आप करेंगे प्लस ए या माइनस ए, तो हर दफा तो आपने ए स्क्वायर ही भेजना है. ए स्क्वायर का एवरेज करेंगे तो ए स्क्वायर होगा. मगर यहाँ पे गड़बड़ है. यहाँ पे तो एक दफा आपने माइनस भी भेजा, फिर 3b भेजा, फिर प्लस भी भेजा, फिर माइनस भी भेजा, तो एनर्जी तो आपकी 9b स्क्वायर और बी स्क्वायर जा रही है. फिर उसका हमने आपको याद है एवरेज निकाला था 9b स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर.
वो तो हो गया 20b² डिवाइड बाय 4 के तो 5b² इसकी एनर्जी आई ना, वहाँ a² है, यहाँ 5b² है। सर ये समझ नहीं आया किस तरह इसका सॉल्यूशन दिखाएगा। ये मैंने आपको मतलब पहले करवाया था, SNR फॉर पैम इज इक्वल टू 5b² ओवर n0। इसकी एवरेज एनर्जी आपने कैसे निकालनी है, सिर्फ इस सादे पैम की, ये याद जी आया आपको? सर A² करके हमने निकालनी थी, हाँ, जो a² मैंने तो एवरेज BPSK की है ना, मगर इसकी कैसे निकलेगी पैम की? पैम में तो मसला है कि सिंबल्स आपके डिफरेंट है ना, जी -3b +3b, तो उनका स्क्वायर लें सबका, फिर उनकी एवरेज ठीक लें, तो वो तो 5b² आएगा ना, चूंकि 20b² हो जाता है। ठीक है सर ठीक। तो इधर जो SNR आएगा वो आएगा पैम का SNR आएगा। यस ठीक है, ये आपने खुद थोड़ा ड्राइव करके देखें, पैम का निकालेंगे ना, तो यहाँ पे आप देखिएगा 5b² ओवर n0 आएगा यहाँ। ऑलराइट, और दूसरी बात ये भी है कि वहां का d1 d2 क्या होगा, पैम का d1 d2 क्या होगा, दैट विल बी 2 और √5। आप कहेंगे सर ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ, देखा मैं दिखाता हूँ। अब पैम में क्या होगा भाई, पैम में होगा d1 will be equal to xa1 माइनस xb1, ठीक है, ओवर नॉर्मलाइज्ड। तो जो वहां पे देखे ना a² का a नॉर्मलाइज था, ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मलाइज क्या हुआ, यहाँ पे नॉर्मलाइज है √5b। ठीक है, अगर a² था, आपने a से डिवाइड किया था, तो अब जब 5b² है तो उसको आपको डिवाइड करने का √5b से, तो इसका d1 बनेगा xa1 माइनस xb1, 3b माइनस b, ये हो जाएगा 2b ओवर √b5। ये क्या हो जाएगा 2 ओवर √5। इसीलिए 2 √5 d1 में भी आएगा, और d2 तो सेम ही है, d1 के बराबर है, क्योंकि इसमें तो जस्ट रिपीटेशन ही है, कोई थीटा शीटा का चक्कर तो है ही नहीं। सारे d1 d2 किसके बराबर हैं, 2 ओवर √5 के। ठीक है, सेम वही सिस्टम आपने करना है पैम के लिए जो आपने अभी अभी BPSK के लिए किया, मतलब रोटेशनल कोड्स को के लिए किया विद BPSK। अच्छा, अब इसका मिनिमम स्क्वायर डिस्टेंस कितना आएगा, उसने, हाँ मिनिमम कैसे आएगा, आप वही चक्कर चलाएं, d1 d2 मॉड स्क्वायर, d1 d2 मॉड स्क्वायर, आप ये वाली पुट करें। अब इसका डेल्टा भी कितना है, 16/25 आ गया। अब इसी 16/25 को आपने उसी एक्सप्रेशन में पुट करना है जो हमने निकाली थी, जनरल जो निकलती है आपकी। So when you will put, you will get this particular as 75 SNR minus 2. So its delta AB is 16/25, while the delta AB for rotational code we just saw comes out to be 16/5. इसका 16/5 था तो वो 15 आ गया था, और इसका कितना आया है 16/25, इसीलिए इसका एरर जो है वो 75 आ रहा है। यानी इसका जरा हायर बॉन्ड से आप उसको रोक रहे हैं, और उसको आपने 15 से ही प्लेस कर दिया था। इसका मतलब इसकी एरर प्रोबेबिलिटी को आपको 75 से बाउंड करना पड़ेगा, वहाँ 15 से बाउंड कर रहे थे। और प्रोडक्ट डिस्टेंस के हिसाब से भी इसका प्रोडक्ट डिस्टेंस जो है वो 16 आ रहा है, और उसका आ रहा है 16/5। तो इसका प्रोडक्ट डिस्टेंस कम है और उसका ज़्यादा, जितना ज़्यादा प्रोडक्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा फ़ायदा है आपको। जितना तो उतना ज़्यादा फासलों पे हैं आपके जो हैं सिंबल्स हैं, ठीक है, और जितना ज़्यादा फासला होगा उतना एरर आपका कम हो जाएगा। सो इससे पता चला कि वाकईतन वो रोटेशनल कोड इज़ बेटर देन simple repetition code. And another comparison that he has written here, that if we let us say keep their products distance same, then we can see the rotational code provides an improved coding gain in terms of saving the transmit power by a factor of √5. Okay, so again I have solved this confusion once and for all so that students are not confused. So you know, probability of error for PAM is this thing, probability of error for rotational is this thing.
ठीक है. So so there are various ways I can see this. So if I let us say that PAM is like this, all right, 15/5 SNR. So this comes out to be 5 goes here. Inside this will become SNR under root whole square, and SNR is signal power or noise power. The signal power over under root 5 NP square. So this means that if I keep the PAM's product distance to 15, all right, equivalent to that for rotational code, then the signal power that is required, okay, will be actually under root 5 times less, all right, in dBs, but it will be less, divided by under root 5 times less, all right. This is the advantage of rotational code, that it will require less transmit power for the same product distance. The other ways also of understanding this, you can say, all right, probability is 75. If I take the probability of error for rotational and I make its product distance equal to that of PAM repetition, so multiply by 105, multiply by 5, 5 go inside, this becomes 105, this becomes 75. Now this is the product distance for PAM. So if I make equal to the product distance of PAM, I will be requiring 105 times more power. So this gives us a very good effect that rotational code is better in terms of transmit power by under root 5. And in terms of probability of error, you can see that it is 5 times more. It is bounding the rotational code error by 5 times, a factor of 5 times more. So hence rotational error probability is less than PAM. Now why this is all happening? This is all happening because we have spread our code words in two-dimensional space rather than we are packing them on a single line, as in case of repetition coding. Same reason was why QPSK was better than BPSK, because BPSK was one line, while you could see in QPSK you had spread your symbols in two dimensions. So you can summarize your time desi code design criteria as follows, which is written here. You can read this up. Same thing that we have studied. So you can get a general rule for transmit diversity techniques. One of them we studied, that was the rotational code. Now rotational code, we saw it is designed for exploiting time diversity. But what happens in AWGN channel? If we don't have flat fading or frequency selective, no flat fading or we just have a AWGN channel, which means signal plus noise, where noise is identified constant noise, simple noise on one channel. So noise is invariant to rotations. So rotation code will not give me any advantage in a simple AWGN channel. Now the codes that are designed for AWGN channel, for example the linear block codes or the convolution codes, they can be used to extract time diversity in fading channel. They are actually designed for AWGN channel. But if you combine them with interleaving, if you combine the AWGN codes with interleaving that we have just studied now, you can also get time diversity gain in fading channels. For example, if I use linear block codes, they are a form of code. You don't have to go in detail. You might be studying them in your other courses, let us say coding theory. So if you have, let us say, binary linear block code, where the coded symbols are interleaved, then diversity gain comes out to be minimum Hamming distance. Now you will say, sir, what is minimum Hamming distance? So I have also got the definitions of all these. Okay, we just have to know the definition, not to go into detail. So what is Hamming distance?
Hamming distance is of a code or of two codes is equal to measure of the difference between the code words or number of corresponding elements or positions in which they differ. अब देखिए दो कोड्स हैं उनमें अगर चार बिट्स का डिफरेंस है तो यू विल से योर हैमिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू 4. मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस क्या होगा कि जी आपके कोड में मिनिमम डिस्टेंस क्या है किसी भी दो कोड्स का. आपका जो कोड वर्ड है उसके भी दो भी कोड्स कोई भी दो कोड उठा लें उनका डिफरेंस निकालें सबका निकालें डिफरेंस जो मिनिमम होगा ना हैमिंग डिस्टेंस दैट विल बी कॉल्ड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ कोड. तो आपका कन्वोल्यूशन कोड क्या होगा. कन्वोल्यूशन कोड का जो फ्री डिस्टेंस होता है मिनिमम फ्री डिस्टेंस वो यही होता है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ कोड. असल चीज़ यही है कि आपने हैमिंग डिस्टेंस निकाला फिर जो उसका मिनिमम वैल्यू होगी पूरे एक सेट ऑफ कोड वर्ड्स के लिए वो उस पूरे कोड का मिनिमम डिस्टेंस या मिनिमम फ्री डिस्टेंस बन जाएगा. सो ही इज सेइंग दैट diversity gain for binary linear block codes where the code symbols are interleaved is simply the minimum Hamming distance, which I just told you, minimum Hamming distance between the codes, or equivalent to the minimum weight of a code word. So diversity gain of a binary convolution code, अगर convolution code आप यूज़ करें उसका diversity gain क्या होगा वो उसके free distance के बराबर. And you remember free distance is the same as the minimum Hamming distance. Sorry. So minimum Hamming or what is the minimum of the distances between the code words of a code, that difference will determine the diversity gain of that code. सर इनमें जी जी इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस और मिनिमम वेट ऑफ द कोडेड सीक्वेंस. मतलब अगर मैं हम डिस्टिंक्शन करना चाह रहे हो. मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस का मतलब है कि मिनिमम वेट का मतलब क्या है जो मिनिमम डिफरेंस है किसी भी दो कोड वर्ड्स का आपके पूरे कोड वर्ड्स में. देखिए ना आपने 16 कोड वर्ड्स बनाते हैं अपने उनमें से हर के साथ डिफरेंस निकालें. अगर आप किसी दो का डिफरेंस निकालेंगे वो तो आपका हो गया हैमिंग डिस्टेंस. ठीक हो गया. मगर अगर आप सबका डिफरेंस निकालते हैं 16 का 16 के साथ और उनमें से जो मिनिमम होता है जो वैल्यू होगी ना उसको आप कहेंगे मिनिमम वेट या मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस कह सकते हैं. इस तरह से आप उसको मतलब कह सकते हैं. मिनिमम डिस्टेंस ऑफ कोड कह सकते हैं मिनिमम फ्री डिस्टेंस कह सकते हैं मगर साथ में उसके ना मिनिमम लग जाएगा. सर वो शो खाली होता है मतलब मिनिमम पाथ प्रोपगेशन पाथ को शो कर. मिनिमम का मतलब है कि कम फासला है ना भाई. एक कोड और दूसरे कोड में कम से कम फासला हो गया ना. अगर सिर्फ उनमें अगर दो का डिफरेंस है मिनिमम कोड वर्ड्स का डिफरेंस 2 था इसका मतलब उनमें से फासला ही 2 का. सिर्फ 2 बिट्स को चेंज करेंगे आगे दूसरा कोड आ जाएगा. सर किसके रिलेटिव चेंज करेंगे. मतलब क्या मतलब 1 जैसे 100 है और जी. दूसरा जो है आपका खाली 11 है तो इसका मतलब 3 जीरोज है वहाँ पे 3. इसका कोड डिफरेंस कितना इसका 3 का डिफरेंस है. अगर वो 3 बिट 0 से 1 हो जाएंगी तो वो सेम कोड बन जाएगा जो कोड जिससे आप कंपेयर कर रहे थे. ठीक है. अच्छा सो दिस परफॉर्मेंस एनालिसिस there are pursued in 3.11. Code design criteria is derived. So this has been driven if we assume Rayleigh fading. So you know what is Rayleigh fading that we have studied in detail. So if the fading is Rayleigh, we choose the Rayleigh fading H01. All right, Rayleigh is that x square plus y square under root all that. So if we have Rayleigh fading, then we have all these things which we saw earlier. But if we have correlated fades, we don't have Rayleigh fading, but we have correlated fading.
in which means that the symbol from one to other is related. Here, every symbol was xy, and xy was, a Gaussian random variable coming just out of a random variable. So, but if I say that x is related to the previous x, for example, a Markov chain, okay, one x is related to its previous x, or one y is related to its previous y, then in that case I will get correlated fades. Similarly, if I use Ricey सर fade, मैं आपको टोक रहा हूँ सर, हमने मार्कअप चेंज नहीं पढ़ी सर। हाँ मुझे पता है, तो यहाँ भी आपको मैं सिर्फ छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये आपने एज इट इज तो करना नहीं है, ज़ाहिर है वो आपने पढ़ा नहीं है। मैं वैसे ही बता रहा था कोरिलेटेड फेड्स क्या होते हैं ना। कोरिलेटेड फेड्स का मतलब है कि फेडिंग जो है वो रिलेटेड है आपस में। देखिए ना, रेडी राइसिन में क्या हो रहा है, हर दफ़ा एक नया नंबर आ रहा है ना एक्स वाई, उसकी वजह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट बन रहा है और मैग्नीट्यूड उसका बन रहा है, ऐसा ही है ना। यस तो वो अनकोरिलेटेड है ना सारा का सारा, मगर कोरिलेटेड में क्या होता है, वो रिलेटेड होते हैं आपस में। जो अभी वाला मैग्नीट्यूड है वो नेक्स्ट वाले से थोड़ा बहुत रिलेट कर जाता है, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल दी, मसलन जैसे मार्कऑफ में होता है, वैसे नहीं, बेशक आपको नहीं भी पता, वैसे मैं कह रहा हूँ कि उसमें ये होगा कि जो x1 होगा ना वो अपने x0 से थोड़ा बहुत रिलेट होगा। जैसे मैं कहता हूँ x1 इज इक्वल टू x0 प्लस w, तो x1 थोड़ा रिलेट हो गया ना। ये तो नहीं कि x1 एक दोबारा एक नए उसी रैंडम पास से कोई नया नंबर आ रहा था इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंस में थोड़ी बहुत रिलेशन हो गई ना, उससे कहते हैं कोरिलेटेड फेड्स, ठीक है। पर वो हमारे कोर्स में नहीं है, वैसे मैंने आपको समझाने के लिए बताया। वो कह रहे हैं अगर कोरिलेटेड फेडिंग हो गई, ठीक है, तो फिर तो जाहिर है फिर ये चेंज हो जाएगी सारी जनरल। हमने सिर्फ अभी ये सारा कुछ जो बता रहे हैं वो हम बता रहे हैं रेली के लिए। तो उसने कहा अगर राइसिन हो, राइसिन के लिए भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि राइसिन में आपको पता है कि ठीक है आपके पास सारे पाथ्स स्कैटर्ड होकर इंडिपेंडेंट आते हैं, मगर एक पाथ होता है जो डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट भी होता है। सो ये जो सारे कोड डिज़ाइन क्राइटेरियाज हैं, they all depend on specific channel statistics. Now let us go to a very important example, and that is the industrial example. So in 2G systems, which are the famous GSM systems still being used in Pakistan, time diversity was achieved by interleaving, by combining convolution codes with interleaving, that we will try to understand today. And GSM, you all know it, it is a FDD system, frequency duplex systems. So you use 225 megahertz bands. One band is for downlink, other band is for uplink. Downlink operates from 890 to 915. Sorry, uplink operates from 890 to 915, while downlink operates from 935 to 960. So both are 25 megahertz bands. Each band is further divided into a 200 kilohertz sub-channel. There will be various 200 kilohertz sub-channels within each band. Now each sub-channel of 200 kilohertz is shared in a TDMA fashion among 8 users. तो पहले तो देखिए ना आपने फ्रिक्वेंसी डिवीजन की हुई है कि जी पूरे 25 बैंड को you have divided into 200 kilohertz bands, but each 200 kilohertz band is divided in a TDM fashion. All right. Now secondly, you can see that the data of each user, ठीक है, is of length 577 microseconds. All right. Now, what if data of one user is 577 microseconds? Then what will be the time slots for 8 users? For 8 users, it will be 577 multiplied by 8. So one time slot that a user is given is 577 microseconds. So there are 8 users, all right, 0 to 7 or 0 to totally means 8 total users. All right, so that 200 kilohertz is timely or TDMA distributed among 8 different users. So for some time only TSO is sent, for some time TS1 is sent, for some time TS2 is sent, and so on and so forth. All the users are sent from 0 to 7 for that sub channel.
सर जी जी। सर इसमें कुछ टर्म्स हैं, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्स, सर ये क्या चीज़ें होती हैं? वो अभी तो आपको हल्का सा बता रहा हूँ ना कि आपने 25 जो मेगाहर्ट्ज को, इससे एग्जांपल कर लें बस। हाँ एग्जांपल मैं करा रहा हूँ आपको। आपने 25 मेगाहर्ट्ज को 200 किलोहर्ट्ज में डिवाइड किया, तो वो तो एफडीएमए हो गया, ठीक है ना। आपने पता नहीं कितने 200 किलोहर्ट्ज के आपने ग्रुप्स बना दिए, 25 मेगाहर्ट्ज को, 25 मेगाहर्ट्ज देखें ना, 25 मेगाहर्ट्ज का मतलब हो गया कि 25 × 10⁻6, तो 25 10⁻3 वो 25 किलो के हज़ार डिफरेंट हैं। रफली कह लें कि 200 के हज़ार डिफरेंट आपके पास ग्रुप्स हैं। अब जो हर ग्रुप होगा उस ग्रुप को आपने 8 यूजर्स में डिवाइड करना है। अब वो टीडीएम में कर, टीडीएम का मतलब उसको पूरा, या इस टाइम स्लॉट के लिए एक ही यूजर को पूरा मिल जाएगा 200 किलोहर्ट्ज। अगले टाइम स्लॉट के लिए जो भी होगा उसमें पूरा का पूरा सेकंड यूजर को मिल जाएगा, थर्ड इसे सेवंथ यूजर को इस टाइम स्लॉट में पूरा का पूरा 200 किलोहर्ट्ज मिल जाएगा। तो यहाँ टाइम डिवीजन हो रहा है, ओवरऑल फ्रिक्वेंसी डिवीजन हो रही है, ठीक है। अब हर एक यूजर को आपने जो स्लॉट देना है 577 माइक्रोसेकंड्स का है, तो टोटल जो आपका फ्रेम होगा वो 8 × 5 वो हो जाएगा 4.615। सर हम खाली एफडीएमए में नहीं मूव कर सकते, मतलब हम टीडीएम में अब आए लगे एफडीएम। मतलब अभी तो आप पहले इंडस्ट्री तो देखें ना, उसके बाद आपको समझ आएगा। अभी आप थोड़ा सा देख लें, उस वक्त जब थोड़ा सा आप एफडीएम में भी पढ़ेंगे, इसमें एफडीएम में भी आएगा। मतलब अभी तो हम टीडीएम में पढ़ रहे हैं, चूँकि हमने इसमें अभी हमने पढ़ाई सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ी है, वो हमने पढ़ा है टाइम डाइवर्सिटी। पहले ये तो देखें ना कि टाइम डाइवर्सिटी की इंडस्ट्री में क्या यूसेज है। जब बाकी डाइवर्सिटी टेक्निक्स आएंगी तो वो फिर आस्ते आस्ते ऐड ऑन होता जाएगा। अभी सिर्फ आप देख रहे हैं कि टाइम डाइवर्सिटी तो पुरानी टेक्निक थी, तो उससे 2G ने इसी को इम्प्लीमेंट किया। तो 2G का हम स्टैंडर्ड पढ़े, हम अपने से नहीं बना रहे ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, हमने कहना जो स्टैंडर्ड है उसमें क्या था, ताकि हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें। अच्छा, अब वहाँ पे आपको पता है जीएसएम में तो इंटरनेट तो था ही नहीं, मेन एप्लीकेशन तो आपकी वॉइस थी। अच्छा, वॉइस में क्या होता है? वॉइस में इट हैपन्स दैट योर स्पीच इनकोडर encodes your speech frames into length of 20 milliseconds. So your speech frames are of length of 20 milliseconds. Acha. Now what happens is the bits in each speech frame are further encoded by a convolution code rate of half with two generator polynomials this and this. हाँ जी, आप में से किस किस ने कन्वोल्यूशन कोड पढ़ा हुआ है? किसी ने कन्वोल्यूशन कोड पढ़ा आप में से कि नहीं पढ़ा? सुना आप बहुत कोडिंग थ्योरी पढ़ के आए हैं। नो सर। अच्छा, नहीं पढ़ा। अब देखिए व्हाट इज कन्वोल्यूशन कोड, ये थोड़ा सा आपको रफली बता दें, काफ़ी इंपॉर्टेंट कोड है हमारे कम्युनिकेशन के। सो कन्वोल्यूशन कोड में एक्चुअली होता है कि आपके पास एक शिफ्ट रजिस्टर होता है, ठीक है। उसकी कुछ फिगर इसने यहाँ शो की हुई है, ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मगर चलें जनरल फिगर दी है इसने। उसमें देखिए ना, ये स्टेजेस हैं आपके कैपिटल के स्टेजेस होते हैं, 1 स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज अप टिल कैपिटल के स्टेज होते हैं। हर स्टेज की जो रजिस्टर की लेंथ होती है वो स्मॉल के होती है, 1 से लेके के तक। के 5 भी हो सकता है, 6 भी, 5 जो मर्जी उसकी लेंथ होगी। अब क्या होगा कि एक साथ के बिट्स अंदर आएंगी तो वो सारी की सारी इसको रिप्लेस कर देंगी, तो इसकी सारी बिट्स जो हैं वो अगले स्टेज में चली जाएंगी, इसकी सारी अगले में जाएंगी, यहाँ तक कि आखिर वाली की आखिर में, सबसे आखिर वाले की बाहर निकल जाएंगी। अच्छा, ये तो आपकी स्टेजेस हो गई और ये आपकी इनपुट हो गई। साथ आपने आउटपुट्स बनाई होती हैं। अब जैसे ये आउटपुट है वो कहीं से भी ले सकती है, ये वाली आउटपुट भी कहीं से भी उठा सकती है, आपके डिफरेंट स्टेजेस की डिफरेंट बिट्स की वैल्यूज़ के साथ। तो अब किसी भी टाइम पे क्या होगा कि जब ये एक सेटिंग हुई है तो आपका वन फंक्शन फर्ज करें इनकी इनपुट्स को लेके ऐड करके कोई मॉडलो बाइनरी मॉडुलेशन बाइंड्रो मॉड ऐड करे, यानी बाइनरी एडिशन करके एक आउटपुट देगा आपको। अगली जो आउटपुट होगी, अगली जो बिट होगी वो 2 फंक्शन से निकलेगी, अगली थर्ड बिट 3 फंक्शन, इस तरह से आपके पास n फंक्शन की बिट्स निकलेंगी। आपने k बिट्स भेजी थी और हर एक k के अंदर जाने से आपकी n बिट्स बाहर आ रही, ठीक हो गया। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि हमारा रेट क्या है, हमारा रेट इसे कहते हैं कोड रेट, वो होता है k/n। आपने k की सीक्वेंस ली और n की आउटपुट ली, ठीक है, तो आपकी कोड बिट
आपका कोड रेट क्या हो गया, के ओवर एन, और कैपिटल के को आप कंस्ट्रेंट लेंथ भी कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, हमने तो बस एक्चुअली पता कि हमने कोडिंग थ्योरी तो करनी नहीं, मकसद में हमें थोड़ा समझना चाहिए ताकि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को समझ सकें, और जितनी हमें ज़रूरत है उतना हम लर्न करें। बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है इसकी मैथ में जाके इसके प्रॉब्लम सॉल्व करना। वो जो आप कोडिंग थ्योरी का कोर्स माशाल्लाह बैच से आप पढ़ाते हैं, आप पढ़ेंगे तो काफ़ी हद तक आपकी लर्निंग हो जाएगी। हमने तो बस वायरलेस स्टैंडर्ड्स तक रहना है। तो कहते हैं जी एग्जाम्पल ले लें आप, 3 स्टेज हैं, हर स्टेज की विड्थ जो है वो 1 है, यानी देखिए सिंपल सही, सबसे सिंपल पढ़ाया जाता है। 3 स्टेज हैं, हर स्टेज की एक ही बिट की लेंथ है बस, ठीक है। 3 आउटपुट्स आपने ले ली, अब 3 आउटपुट्स हैं आपकी, एक बिट, एक आउटपुट जो है ना वो आप देखिए 1 है, वो पहली जो भी बिट है वो आउटपुट हो जाएगी। दूसरी आउटपुट क्या कह रहा है जी 1 ले लो, और थर्ड में जो पुट पड़ा हुआ है ना वो आपका 2 हो जाएगा। 3 कह रहा है यार मैंने ना पहले दूसरे तीसरे में तीनों में जो पढ़ा उन तीनों को सम करो और जो मेरा आउटपुट होगा वो आउटपुट हो जाएगा। आपने कहा ठीक है जी आउटपुट हो गया, चलिए जी इसको चेक करें आप। पर कहें जी पहले सारा 0 0 पड़ा हुआ था, ठीक है जी 0 0 पड़ा हुआ था। अब उसने कहा जी सबसे पहले एक 1 आया, 1 यहाँ पे आया तो 1 इधर घुस गया, ठीक है, इसका 0 यहाँ चला गया, इसका 0 यहाँ चला गया, तो अब आपके पास हो गया 1 0 0, ठीक है। अब जब 1 0 0 आपने एक बिट अंदर पुट की, तो अब आपने उस जगह आपके एक वक्त में एक ही बिट जाएगी, क्योंकि आपका एक बिट के तमाम स्टेजेस हैं। अब इस एक बिट के जाने से आपने तीनों आउटपुट्स को कैलकुलेट करना है। अब 1 पे आउटपुट क्या होगी 1, जो यहाँ तो 0, 1 + 0 = 1। 2 पे आउटपुट, सॉरी 1 पे तो होगी 1, चूँकि 1 तो खाली जो है ना वो पहले से ले रहा है। 2 किसके बराबर है 1 और थर्ड के, तो 1 + 0 1, तो 2 भी 1 आ जाएगा। 3 क्या होगा 1 + 0 + 0, तो ये भी 1 आ जाएगा। तो तीनों की आउटपुट्स क्या आ जाएंगी 1 1 1 आ जाएगी। इस तरह आप बाकी बिट्स पुट करते जाएं, आप आउटपुट्स निकालते जाएं, ठीक है। तो आप देख लें कि हर एक बिट आप पुट कर रहे हैं और 3 आउटपुट्स आ रही हैं, तो इसका कोड रेट क्या होगा, उसका कोड रेट क्या होगा 3 में 1 है 1/3 होगा ना। हाँ 3 आपकी बात समझ, आपने उल्टा के लिख दिया इसका, एन नीचे आता है ना आपका, के ऊपर आता है, के ओवर एन, तो 1/3, ऑलराइट, इसका रेट 1/3 होगा। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि भाई G1 मेरा है 1 0 0, वो पहले से लेता है बाकी वो 0 0 कर देता है। G2 क्या आपका 1 0 1 है, ठीक है। G3 क्या होगा 1 1 1 होगा, ठीक है। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि जी मैं कन्वॉल्व कर रहा हूँ किसी भी स्ट्रीम को अपने तीनों जनरेटर्स के साथ, तो मेरे पास 3 आउटपुट्स आ रही हैं, ये भी आप बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। और फिर मैं इन 3 आउटपुट्स को जो है वो ऐसे पुट, पहले 3 आउटपुट्स जाएंगी, फिर अगले वाले की 3 आउटपुट्स जाएंगी, इनको मैंने आज में इंटरलीव पे पुट कर दिया। एक और चीज़ जो आज इंडस्ट्री में यूज़ हो रही है और जो इस बुक ने यूज़ की, जो बुक तो इंडस्ट्री को फॉलो करती है वाली, कि आप एक फंक्शन में इसका ट्रांसफॉर्म ले लें। ट्रांसफॉर्म का फ़ायदा क्या होता है, कन्वोल्यूशन की जगह आप मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो आप यूज़ से द ट्रांसफॉर्म इज जस्ट, जैसे आप कहते हैं एफ, ये डी ट्रांसफॉर्म था, आपने बस जो भी इनपुट है वो 1 0 है ना, उसको आपने डी से जो भी उसकी सीक्वेंस होगा, अगर फर्स्ट डब्बे में है, सेकंड में है, थर्ड में, आपने उसके डी के पावर के साथ उसका ट्रांसफॉर्म ले लेना। तो अब जो G1 dt था, जो आपको पता है कि वो बराबर था 1 0 0 के, तो पहली पोजीशन पे वो 1 था, ठीक है, और वो D 0 था, बाकी पोजीशन वो 0 0 था, तो वो तो 1 ही रहेगा। G2 तो आपको पता है 1 था, फिर D1 पे 0 था, फिर D2 पे 1 था, तो 1 + D² आ जाएगा। G3 आपका क्या आ जाएगा 1 + D + D² आ जाएगा। ये फंक्शन निकल आए, ये को जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना है इनपुट सीक्वेंस के साथ, तो जो आपकी आउटपुट होगी ये सारी आपकी आउटपुट्स आ जाएंगी C1 C2 और C3, और फिर C1 C2 C3 को आप सबको ऐड कर देंगे, क्योंकि पहले आपने इसको भेजना है फिर आपने इसको भेजना है, तो ये पहली में जाएगी, ये सेकंड में जाएगी, तो ये जरा D से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये थर्ड में जाएगी जिसको आप D² से मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे, तो आपकी ओवरऑल कोडेड आउटपुट आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ D। फिर D को आप 1 0 में कन्वर्ट कर दें तो 1 0 में वैल्यू आ जाएगी। मतलब उसने एग्जाम्पल दी, उसने कहा जी U मेरा ये था, आपने कहा जी पहले तो U को D डोमेन में लिखो, अच्छा जी लिखो 1 D 0 1 आ गया, 0 D 1 0, 0 D 2 0, 1 D 3 D 3 D 4 D 5, ये आपका वो ट्रांसफॉर्म बन गया, ठीक है, डी ट्रांसफॉर्म कह लें आप। जब ये आपका डी ट्रांसफॉर्म बन गया, उसके बाद आपने कहा ठीक है भाई ये ट्रांसफॉर्म लो और इसको मेरे C1 C2 C3 जो मेरे 1 है 1 + D इनसे मल्टीप्लाई कर दो। जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया इनको, वो जो आपके ये जो फंक्शंस थे आपके G1 G2 और G3 का मल्टीप्लाई किया, आपके पास C1 C2 और C3 आ गया। अब पहले आपने C1 को भेजा, ठीक है,
फिर आपने भेजा C2 को, मगर C2 को भेजना है D से मल्टीप्लाई करके, और C3 को भेजना है आपने D स्क्वायर से मल्टीप्लाई। जब आप करेंगे ऐसा मल्टीप्लाई वगैरह ऐड करेंगे तो ये बनेगा। अब बहुत दफ़ा होगा ना, इसका सिंबल इधर घुस रहा होगा, इसका सिंबल आगे, डिपेंडिंग जो उसकी पावर्स होंगी, ठीक है ना। ये आपस में इनको आपने खत्म खुत्ता या इंटरलीव कर दिया आपने, ठीक है। तो ये भी इंटरलीव का तरीका है। अगर आप इसी चीज़ को आप 101 की टर्म्स में लिख सकते हैं, यदि पहले 1 था फिर 1 होगा, तीसरे में भी 1 होगा, ठीक है। D3 D4 0 0 होंगे और फिर उसके बाद आप उसको लिख दें। तो ये है सारी की सारी कन्वोल्यूशन कोड। तो यहाँ पे हमने ये 3 जनरेटर फंक्शंस पढ़े। तो इंडस्ट्री में जो GSM का है उसके लिए जो फिर रिसर्च के बाद जो यूज़ हो रहे हैं वो ये 2 ट्रांसफर फंक्शन यूज़ हो रहे हैं, यानी एक ट्रांसफर फंक्शन की है एक। अब जो बिट आ रही है वो बिट वो आपके उस पूरे कन्वोल्यूशन कोड में जा रही है, मगर 2 फंक्शंस आउटपुट हो रहे हैं। एक फंक्शन जो ले रहा है वो 4th को उठाएगा, 3rd को उठाएगा और 0 वाले को उठाएगा, ठीक हो गया। यानी कि फर्स्ट वाले को उठाएगा, 3rd और मतलब ये तो एक्चुअली 0 वाला था ना, D0, तो ये था फिर D1 पे D2 पे D3, एक्चुअली 4th वाला होता है मगर उसको आप D3 कहते हैं, ये 5th वाले को D4। आप बात समझ गए। आप पावर के हिसाब से 4th कह लें। इसने इन तीनों को उठा के बनाया। एक और पॉलिनोमियल है वो इन चारों को उठा के बना रहा है। तो हर एक बिट आपने एंटर की, इसका मतलब यहाँ पे एक बिट एंटर हो रही है और 2 आउटपुट्स आ रही हैं। इसका मतलब स्टेज यहाँ पे भी स्टेजेस जो आपके लेंथ ऑफ स्टेज है वो k इज इक्वल टू 1 ही है। तो एक एक बिट आप एंटर कर रहे हैं और 2 आउटपुट्स आप जो है वो ले रहे हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टेज आप देखेंगे D4 तक जा रहा है, तो D0 से D4 तक 5 आपकी स्टेजेस हैं। तो बड़े आराम से इसका टेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो अब उसने कहा कि जो नंबर ऑफ कोडेड बिट्स हैं वो 456 होगी आपकी, ठीक है। एक्चुअली इसकी जो हर बिट होगी उसके अगेंस्ट आपको 2 बिट्स मिलेंगी कोड करके, और जो टोटल 20 मिली सेकेंड्स का स्पीच फ्रेम था, अब वो कोड करने के बाद टोटल उसकी कितनी 456 बिट्स टोटल बन जाएंगी। अब जो 456 बिट्स होंगी, ठीक है, इनको आपने कैसे इंटरलीव करना है? इनको आपने इंटरलीव इस तरह से करना है, ये जो 456 बिट्स हैं इनकी पहली बिट आपने भेजी, ठीक है। फिर जो 8th बिट होगी और इसके बाद फिर 16 और करते करते 448 बिट्स हैं, ये सारी आपने फर्स्ट टाइम स्लॉट में रखनी। अच्छा, फिर इस तरह से जो फर्स्ट बिट होगी और जो 9th होगी, जो 8 के बाद, जो 0 के बाद और 448 के बाद, वो सारी की सारी आपने सेकेंड टाइम स्लॉट में रखनी, ठीक है। एक टाइम स्लॉट में ये देखें इस तरह से डिवीजन हो रही है यहाँ पे, ये देखें, ये आपकी यूजर की स्ट्रीम्स थी, ठीक है। आपके पास सिर्फ 1/8 है, पूरा डब्बा इतना बड़ा था ना उसका, जो पूरा TDMA का 8 यूजर का स्लॉट है, आपके पास सिर्फ पहला डब्बा है। अब पहले डब्बे में आपने ये नहीं करना कि इसकी सेकंड बिट डाल देनी, नहीं, आपने पहले अपने पहले डब्बे में पहली बिट डाली और फिर आपने 8th बिट को डाला, ठीक हो गया। दूसरे डब्बे में आपने अपनी सेकंड बिट डाली और अपनी 9th बिट को डाला। इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, आपने डेटा को इंटरलीव कर रहे हैं, ठीक है। और टोटल जो आपकी टोटल आपकी जो स्लॉट्स होंगे वो 8 आपको टोटल स्लॉट्स चाहिए होंगे, तो टोटल 8 स्लॉट्स में आपकी सारी की सारी बिट्स जो हैं वो बड़े आराम से सेट हो जाएंगे, मगर उनको आपने सेट किस तरह से करना है, उनको इंटरलीव करना है आपने। मैंने भी बनाने की कोशिश की, मगर इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ना 456 बिट्स हैं आपकी और आपने उनको 8 स्लॉट्स में, अब हर स्लॉट में आपके पास सिर्फ 57 जो है ना बिट्स आप डाल सकते हैं, ठीक हो गया। सो आपने इस तरह से उनको बेसिकली जो है वो पुट करना है, इस तरह से 0 डाला, फिर आपने 800 को डाला, इस तरह से फिर आप नेक्स्ट को डालें ना, 16 को करते करते 448 तक जाएं, वो सारा एक आपका बन जाएगा डब्बा। फिर ये बाकी यूजर्स यहाँ पे आ जाएंगे। फिर जब आपका दोबारा आपको स्लॉट मिलेगा उसमें आपने अपनी सेकंड बिट डालनी और फिर सारों की सेकंड डाल देनी, फिर बाकी यूजर्स का कब्जा हो जाएगा, फिर आपका यूजर आएगा। इस तरह से आपकी सारी बिट्स जो हैं वो ऑक्यूपाई हो जाएंगी। सो टोटल जो फ्रेम थी
वो जैसे मैंने कहा कि 4.615 थी जो इधर मैंने बताया था, 8 यूजर्स की टोटल लेंथ 4.615 है। ठीक है, अब आपको एक फ्रेम, आपके तो 8 फ्रेम में डेटा जा रहा है, टोटल आपका डेटा हो जाएगा 8 इंटू 4.165 वो तकरीबन 33 मिली सेकेंड्स आ जाएंगे, तो रफली 40 मिली सेकेंड्स आ जाता है। तो 40 मिली सेकेंड्स जो है वो अगर इतने ज़्यादा 40 मिली सेकेंड्स का डिले है, उसके बाद सारी डेटा को वो एक साथ करके कंबाइन करके आपका जो है यू विल हियर द साउंड, तो बट दिस डिले इज जस्ट टू बी टॉलरेबल फॉर वॉइस। ऑलराइट, so 20 milliseconds, 40 milliseconds, they are shared with 2 milliseconds स्पीच फ्रेम। और 20 मिलीसेकेंड की एक्चुअल स्पीच फ्रेम थी, कोडिंग के बाद दो 20-20 की 40 वाली होगी, उस 40 को आपने पूरे में सेपरेट कर दिया, तो आपको 40 मिलीसेकेंड डिले के बाद आपको अपना पूरा डेटा मिल गया। नाउ व्हाट विल बी द डाइवर्सिटी गेन? यू कैन सी हियर I am interleaving in 8 different slots my same data. So yes, I will be getting a diversity gain of 8. But this is if every other slot comes in an other coherence time. That is very important. If this slot and the second slot, they are in both different coherence time, yes, definitely you will get diversity gain. ठीक है सर ये and oh अच्छा, your time is above. आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, एनी क्वेश्चन? सर ये नेक्स्ट टाइम कर लें एग्जांपल सर इसकी। हाँ नहीं ठीक है, मेरे यहाँ से से फिर पढ़ हम नहीं रही, समझ नहीं आ रही। यहाँ से फिर हम नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आगे से। यस ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वैसे में पिछली क्लास जो है ना वो होती है 15-15 पे ना, इन्होंने गलत कर दिया ना, 1-1 घंटे का बना दिया। एक्चुअली 1 घंटे का बनाना चाहिए, 10 मिनट का बीच में स्लॉट होना चाहिए, वो इन्होंने किया नहीं, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। चलिए, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग।